So my name is Arfa Qazi, and I started my career from development sector, and that's when I got into, I would say, sort of designing, because I was working on enterprise development, and I worked with a lot of artisans then, teaching them how to do designs and business. So that was a pretty interesting experience that I had for a few years. Then that's the time when I was living in Islamabad, and very difficult to live in Islamabad then because of my pollen allergies. So then I shifted to Lahore, and that's the time when I got the opportunity to work internationally with a Italian brand in Verona, and that's where I lived for some time, and that was an eye opener. You know, when I started working in Milan, did some international campaigns and fashion campaigns. So that's where my desire to get into fashion started. But then life happened, and I got married, and I went into advertising. But then again, I am basically a creative marketer at heart, and I would say a design junkie, because I was not formally doing designs, but I've always designed clothes for my whole family and my friends living abroad. And ever since I was a kid, I've been designing for myself. Even then, my mother would not design for me. I would not buy clothes for me until and unless I approve. So that sort of a kid I was. And when we sat down and we thought of making House of Arfa, so उस वक्त the first thing that came into my mind was कि we're going to make clothes for everyone. Though it's a very vast term और बड़ा मुश्किल काम है, because जो हमारे यहाँ पर फैशन को कंसिडर किया जाता है वो एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप होनी चाहिए आपकी, एक हाइट होनी चाहिए, और उसी के मुताबिक ज़्यादातर फैशन क्लोथ्स आपके बनते हैं. But our brand philosophy was to create design for women from all walks of life, from all age and sizes. जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग from teenagers clients जो आते हैं, और उसी को ही हम उनकी नीड के मुताबिक और उनकी लाइफस्टाइल के मुताबिक कस्टमाइज़ कर देते हैं. सो हमारी कलेक्शंस आती हैं, लेकिन उसको फिर we love talking to our clients. We talk to them because their comfort, उनका content होना is very important to us. So I'm happy कि जो हमारी brand philosophy रही है to design for the modern woman. And modern woman से मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो मे बी वेस्टर्न कपड़े पहनते हों या फिर young और working हो. Modern woman is anyone who wants to have control over their lives, who want to work hard and be something in life. तो उसके अंदर हमारे पास जो clients आती हैं वो कुछ ऐसी teenagers भी होती हैं जो who have a lot of problem, who come to me and say कि our moms do not understand this, we want to wear particular kind of clothes, लेकिन जो हमारे लिए हमारी mother select कर रही हैं उसमें we don't feel pretty. And that's where I come in, and that's when I speak to their moms, and then there's a long conversation I generally have ताकि एक mid-level हो जाए और the girl gets what she wants, because I think we're all queens. I think we all have the right to look pretty and beautiful. जब से हम पैदा होते हैं हम सारों को खूबसूरत लगने का शौक होता है, and I guess this is our birthright. So as I mentioned earlier, that when I started my career, that was through a development sector. And that's where I started working with women from grassroots level. And from that time onwards, I started listening to so many beautiful stories of women, but they were suppressed. उनके घर वाले उनको नहीं छोड़ते थे कहीं. They wanted to do so much. और मैं यही सोचती थी कि पाकिस्तान की आधी आबादी जो है उसको तो घर पे बंद करके रखा हुआ है, और सो वाई नॉट डू समथिंग कि जिसमें वो भी अपना पैशन को आगे कर सकें, अपने घर वालों की हेल्प भी कर सकें, सिर्फ किचन तक ना रहें बल्कि आगे बाहर निकलें. और जो हम लोग फिर ये भी करते थे कि अगर वो घर से बाहर नहीं जा सकते, अगर वो उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनको ही डिज़ाइन और बिज़नेस सिखा के आगे मार्केट पे हम खुद ले जाएं, लेकिन दे गेट देयर फेयर शेयर. सो उसी टाइम से व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, और हमेशा से मुझे एक शौक़ था और मेरा ये ख्वाब था कि मैं जो भी करूं उसमें मैं और लोगों को भी अपलिफ्ट कर सकूं. उस वक्त शुरू में तो माय आइडियाज़ वर वेरी वेग बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट टू डू. बट जब मैंने हाउस ऑफ आरफा शुरू किया तो उसके अंदर
जब हमने शुरू किया तो उसके अंदर मैंने अपने आस-पास के जो यहाँ पे ख़वातीन हैं, मेरी जो घर के इलाके के आस-पास लड़कियाँ हैं, उनको मैंने अप्रोच करना शुरू किया और उसमें से मुझे बहुत सिलाई, कढ़ाई के और अच्छी साफ़ काम करने वाली लड़कियाँ मिलीं। अभी भी मतलब सिंस वी आर एट इन्फेंट स्टेज, तो अभी मेरे पास 4 लड़कियाँ काम कर रही हैं जो बेसिकली दे वर्क एंड उनको आई हेल्प देम आउट अ लिटिल विद डिज़ाइनिंग, लेकिन दे आर ऑसम एट एम्ब्रॉयडरीज़ और अभी हम हैंड एम्ब्रॉयडरीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। Again, we are approaching some people, some women from Vihari and Bahawalpur and Multan, क्योंकि ये सारी ख़वातीन जो हैं उन हर किसी के पीछे स्टोरी है और आई रियली वांट कि विद माय ब्रांड, विद दिस प्लेटफॉर्म, इनकी स्टोरीज़ को मैं आगे लोगों को सुनाऊं, क्योंकि व्हेन उस ब्रांड का मज़ा क्या, उस काम का मज़ा क्या जिसमें मेरे साथ और लोग भी मिलके आगे अपलिफ्ट ना हो सकें. As House of Arfa, we've been trying our best to change or improve what women think of themselves. So we've been, through our campaigns and through the exhibitions that we've been having, we've been trying our best to provide women in what they're comfortable in. When I say that, that means just not comfort. We want to promote their own image about themselves. We want them to sort of experiment and look fashionable. So for that, I'll just give you an example. So there was at an exhibition, I met this lady. She was around 50 plus, and she came up to me and she said, "I really love this jora of yours, but this has pants, and I don't wear pants." एंड वी ऑफ कोर्स शुरू से ही, बिकॉज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं तो अब शलवार और कमीज़ ही पहनती हूँ. सो दैट्स व्हेन आई आस्क्ड हर, मैंने कहा आपके लिए मैं आप ही की मर्ज़ी के मुताबिक पैंट डिज़ाइन करूँगी, लेकिन प्लीज़ डू वेयर इट. और अगर आपको पसंद नहीं आता या आपको फिर भी फ़ील होता है कि आप ऑकवर्ड लग रही हैं, तो मैं फ्री ऑफ चार्ज आपके लिए इसको चेंज करके आप ही के मर्ज़ी के मुताबिक शलवार बनवा लूँगी. एंड देन ऑफ कोर्स कुछ अरसे बाद जब उनको मैंने पहुंचा दिए कपड़े, तो उन्हीं की बड़े खुशी वाले मैसेजेस मुझे आए और पिक्चर्स उन्होंने मेरे साथ शेयर की, जिसमें शी टोल्ड मी कि सी द वे यू हैव डिज़ाइंड इट, और जिस तरीके से आपने कट्स मुझे दिए हैं, तो मेरी अपनी पूरी फैमिली जो है वो प्रेस कर रही है कि भाई तुम तो पहना करो ये पैंट्स और बिकॉज यू लुक गुड. सो यू सी, इट डिपेंड्स हाउ यू कैरी योर सेल्फ. तो आई फील कि अगर हम अपनी जो भी काम कर रहे हों उसके थ्रू हम फैशन को इस तरीके से प्रमोट कर सकें वेयर इट हैज़ अ कॉज, क्योंकि जिसके अंदर आप सिर्फ अपनी बेनिफिट की बातें करते हैं, अपनी बिज़नेस की बात करते हैं, और आपके साथ जो आपकी टारगेट ऑडियंस है और जिनके लिए आप वो काम कर रहे हैं और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उनको अपलिफ्ट नहीं कर सकते और उनकी तरफ कंपैशन नहीं दिखा सकते, सो आई फील कि दैट वोंट बी, मतलब एटलीस्ट मुझे वो पीस और कंटेंट अपने ब्रांड से नहीं मिल सकता. आई वॉन्ट टू डू well for all the women. I want my brand to get promoted, but in a very ethical way, in a very compassionate way, where all the women look up to our brand as their friend, as their savior, as their fashion savior, I would say.